इस वक्त अगर कोई सेक्टर पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकता है वो आईटी सेक्टर है. Guest that we have with us today, who is Director Learning and Development at PSHA. पर्सनल वैल्यूज पे फोकस है और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये जनरली सबके लिए रूल है. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. It does. Ladies and gentlemen, my name is Sulmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of ContourCast Podcast for Life. Generally, the guests that we have been featuring have been employees of Contour Software. But the guest that we have with us today is not an employee of Contour Software, yet is just as much a family member as anyone else. I'm delighted to have with me today on the hot seat Maliha Javed Khan, who is Director Learning and Development at PSHA. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat, Maliha. Assalamu alaikum ji, thank you so much for having me. My pleasure. Acha, pehle to for a lot of people who may know, but just for clarity, PSHA used to stand for something else and now the name spells out as something else, the acronym. So बताइएगा, what is the change? जी, so PSHA stood for Pakistan Software Houses Association for IT and IT-enabled services. सही. But हमने recently rebrand किया है to encompass more of the industry, represent more of the industry. Okay. And now we are the Pakistan IT Industry Association. बिल्कुल ठीक. तो डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम ओहदा है, एक ऐसा ओहदा है जिसके अंडर आप बहुत सारे बेहतरीन किस्म के काम कर रही हैं विद पीपल इन द इंडस्ट्री, लेकिन हर एक की एक बैक स्टोरी होती है और मलिया की भी बैक स्टोरी होगी ऑफ व्हाई आईटी एंड व्हाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट. Well, शुरू तो IT से नहीं किया था. I started off as a teacher. That's where I started my career. I was 17, I think. तब से ही वालदैन ने जो है शादी के जो सिलसिले हैं वो शुरू कर दिए थे. And I got off married at the age of 19, क्योंकि उनके भी जहन में था that that's the only sort of success metric for a female. Unfortunately or fortunately, 2 years later, my husband left and I found myself a single mother. And I had to support myself and my daughter. Okay. And उस वक्त डिग्री भी नहीं थी मेरे पास कोई. And I felt that the best place to be would be to start as an educationist, ताकि बेटी भी जो है ना वो comfortably school जा सके. And I landed in education and I felt that at that time I felt that maybe, you know, this is just circumstantial or मैं यहाँ पहुँच गई हूँ. But I later realized that it was something that I thoroughly enjoyed doing. So, and it also, I was fortunate to be associated with some of the more forward-thinking schools, progressive schools, or जो project-based learning, inquiry-based learning पे focus कर रहे थे, international baccalaureate schools. So उससे ये हुआ कि मुझे teaching का एक बड़ा fresh perspective मिला. और contextual learning पे focus, students को agency देना, students की बात सुनना. And it meant unlearning the ways that I had been taught. And वो experience बड़ा refreshing था. And so फिर because I told you, you know, because I landed in teaching by chance, I wanted to try something else. So मैं अपनी साथ डिग्री भी पूरी कर रही थी. And after a degree in management sciences, I decided to work with a friend to co-found a startup. And that's where I got a great exposure to the tech industry, to, you know, an entrepreneurial ecosystem in Pakistan. उस वक्त बहुत budding सा ecosystem था, right? जिसमें फिर as co-founder I had to wear a lot of hats. You know, आपको recruiter भी बनना होता है, आपको business development भी करनी होती है, आपको marketing strategy भी devise करनी होती है. But that experience with the support of some key ecosystem players, National Incubation Center हो गया, accelerator programs हो गए, I learned a lot. And coincidentally फिर मैंने education technology में भी काम किया. And then through a mentor and a friend, I ended up at PSHA, IT Industry Association. सही. और यहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो इस वक्त IT Industry Association एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, इस कदर बड़ा प्रॉब्लम है of skilled labor and skilled talent. And that was, it was, you know, एक बहुत बड़ी आप कहें कि मुझे इंसाइट मिली कि अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कदर ये बड़ा प्रॉब्लम लोकल इंडस्ट्री फेस कर. बिल्कुल ठीक. And that leads me to the next question. But before I ask you the next question, thank you for sharing such a personal aspect of your life, which will definitely resonate with a lot of females जो कि शायद उस सिचुएशन से गुजर गए और फिर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे कर पाती हैं. कोई ऐसी कहानी सुनाता है तो
उनको भी एक तसल्ली होती है. So yes, now moving on to the next question, and which is कि इंडस्ट्री की एक reality होती है. And as high as the benchmark may be, but there are struggles and there is a gap. वो बहुत सारे वजूहात की वजह से हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करना होता है. So PASHA is an entity, as you said, कि वहाँ जब आप आएँ, उनकी expectations और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस या इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले सामने आपने आइडेंटिफाई की? सो एक बात तो डेफिनेटली इस्टेब्लिश्ड है कि इस वक्त अगर कोई सेक्टर पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकता है वो आईटी सेक्टर है. एंड तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया जिस वजह से वो आईटी सेक्टर के साथ एक्टिवली इंगेज्ड हैं. बिल्कुल ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एफपीआर हो गया, वो हमारे साथ पहली दफ़ा इस लेवल पे काम कर रहे हैं टू एड्रेस द सेक्टर्स प्रॉब्लम्स, ताकि ग्रोथ देखी जा सके. ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इस वक्त हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 2.5 बिलियन से अबव हैं एनुअल. ठीक है. लेकिन अगर आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, इंडिया को देखें, with a 7x population, उनकी IT exports are 58 times our revenue. इसी तरह बांग्लादेश को देख लें, 30% population हमसे कम है, लेकिन close to double our exports. ठीक है. And IT sector का दूसरा बहुत बड़ा aspect ये है कि it's not a capital intensive sector. अच्छा. हमारी जो expenses होती है ना वो हमारी लेबर होती है, टैलेंट होता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर है. So it's not capital intensive, which means that the key to unleashing the potential of this sector is to work on the skill talent. अच्छा, अब skill talent की जो dearth है, जो scarcity है, उसका अंदाज़ा पाशा ज्वाइन करके मुझे हुआ कि सेक्टर में हर कोई यही बात कर रहा है. That it is a quality and a quantity problem. इस वक्त लोकल इंडस्ट्री को भी सर्विस करने के लिए हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो कि काम कर सकें, जो इनोवेटिवली सोच सकें, जो क्लाइंट्स को सर्विस कर सकें, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल. सो दिस इज द नंबर वन प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस ऑन अ सेक्टर लेवल. बिल्कुल ठीक है. एंड दैट टेक्स अस टू the association that you you developed on an even more intrinsic level with several companies in the industry, including Contour Software, which was at the forefront of an initiative of a joint venture जिसको नाम Techlift का दिया गया. उसके बारे में प्लीज बताइए. बिल्कुल. तो हमने अगर आप देखें अदर सक्सेसफुल कंट्रीज सच एज पोलैंड, सच एज सिंगापुर, सच एज वियतनाम दैट आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, public private partnership जो है is at the forefront as a solution for skill development. Techlift is a program that's very close to my heart. We worked with the Pakistan Software Export Board, and this is the first time के 16 industry के companies जो हैं, leaders जो हैं, they rose up to the challenge, and we collectively developed a program to train students, reskill, upskill them, and prepare them for integration into the market, ताकि वो फॉरेन जो है पढ़ के मार्केट में एंटर होने के लिए, जॉब्स लेने के लिए, प्लेस होने के लिए तैयार हों. एंड उसके लिए हमने इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम भी बनाया. उसमें हमने प्रोग्राम में वी इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स कम टू एन इंडस्ट्री प्रेमिसेस, वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे की फैसिलिटी पे आके बैठ के पढ़ें और डायरेक्टली प्रैक्टिशनर्स से ट्रेनिंग लें. सो वो रिसोर्स, वो इंस्ट्रक्टर जो कि बिजनेस को सर्विस करता है एट दिस पॉइंट, वो ही स्टूडेंट को पढ़ाए, ताकि वो प्रिपेयर्ड हो टू टेक अप बिजनेस डेवलपमेंट एंड क्लाइंट सर्विसिंग इमीडिएटली. And the program is currently underway. We've crossed the 3,000 student mark. Wonderful. Our target was 4,000 for this pilot. Achha. And we are very hopeful that the program will scale in the future. एक और भी बात बताना जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि इसकी अप्रोच डेटा ड्रिवन थी, जहाँ पे हमने इंडस्ट्री से सर्वे किया कि वो कौन सी ऐसे टेक स्टैक्स हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि हमने डेवलप करनी है. और पाशा की ही एक स्किल्स सर्वे रिपोर्ट थी जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई किया top 8 tech stacks और उन्हीं में हम इनको इन स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं. That's absolutely wonderful. अच्छा, when we talk about the Techlift Bootcamp, and we've had other guests on the show also who've actually been part of the training committee or part of the mentor committee, जो कि students को पढ़ाते रहे हैं, वो different perspectives जो है वो लेके सामने आए हैं of what harsh realities they were faced with, कि अच्छा students को इसके बावजूद के competent हैं, talented हैं, keen हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी 2023 में भी नहीं पढ़ाई जा रही हैं.
So उसी तरह आपने जब when this the structure was put into place, and as you said you've hit the 3,000 mark, what are certain ground realities that came to surface कि अच्छा हम इस तरह सोच रहे थे, whether it was bandwidth issues, whether it was coordination, what are the challenges that came forward? So it's a pilot. It was an ambitious pilot, Right. but I think it's a great start for the industry. Okay. Definitely हमारी कुछ इस प्रोग्राम के बाद learnings हैं. उसमें सबसे पहले ये कि स्टूडेंट्स की सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल एथिक पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इंडस्ट्री ने भी हमें यही बताया था, जिसकी वजह से हमने प्रोग्राम के अंदर सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स भी बाकायदा इंटीग्रेट किया. प्रोफेशनल एथिक का हमारे पास इस तरह की स्टोरीज आती हैं कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं, but they don't respond. They'll turn up for the interview, but they won't respond because they're just not trained to, professionally communicate. Right. So it's the little things like these that we focused on with our students. And this also sort of links to, a work ethic parameter. कि students free of cost program देखते हैं, वो आते हैं, they don't complete the program. So also understanding the value of a program like this, and कि हुकूमत ने ये पैसा आपके लिए साइड पे रखा है आपको ट्रेन करने के लिए. So to follow through with the program, ये भी हमने देखा. उसके अलावा हमने ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया, क्योंकि जब हम इतने बड़े स्टूडेंट टारगेट्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरली उस इस पूल को सर्विस करने के लिए आपको फिर इंस्ट्रक्टर्स की भी ज़रूरत है. हमारी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो टेक हमने इंस्ट्रक्टर्स एम्प्लॉय किए, यूटिलाइज किए फॉर द प्रोग्राम, उनकी टेक्नोलॉजिकल जो है नॉलेज वो बहुत अच्छी थी. नेचुरली वो तो काम ही ये करते हैं. जहाँ पे थोड़ा सा गैप था वो उनकी पेडागोजिकल या टीचिंग स्किल्स में था. ठीक है. तो वहाँ पे हमने उनको एक्टिवली ट्रेन किया कि जी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स का कैसे बिल्ड करते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग कैसे आप इन द क्लासरूम इनकलकेट करते हैं, कैसे आप स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं एज एडल्ट लर्नर्स. सो दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग टू देम दैट traditionally coders, programmers, they are introverts, they do their work, they go home. So telling them that you need to step out of your comfort zone as a mentor in this role, that was also huge learning for us. Having said that, क्योंकि हम policy level की भी बात कर रहे हैं, तो you need people to lead, you need institutions to lead such programs. बिल्कुल. So PSHA's played a pivotal role in that sense कि हमने इन तमाम कंपनीज को हम साथ लेके चले और इनको हमने इनकी कैपेसिटी बिल्ड की, फ्रेमवर्क सेट किए, मॉडल को सेंट्रलाइज किया. बट मोर इम्पॉर्टेंटली जहाँ हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, Contour has also played a significant role as JV lead. And it's been a roller coaster journey working with the government. Continuity is such a huge aspect. Bilkul. But I think we can consider this a great start, and hopefully the stepping up of such private sector players will keep the inertia going, and we'll help rectify the problem at the grass. Wonderful. You summed it up so brilliantly well, and here's to many more things that will be achieved with what is the most essential part of any work, and that is collaboration. So Maliha, one perspective is that industry कहाँ lack कर रही है या industry की needs क्या हैं. एक ये ground reality भी है, बल्कि harsh reality है. What kind of support can be given to them by the government through institutions such as PSHA? वहाँ कहाँ gap lie करता है of the kind of support that the industry probably requires, but you're not able to fulfill for whatever XYZ reasons? So, in all honesty, देखें, a national level policy is definitely required to bring about this scale of change. Government की support के बगैर नहीं हो सकता. और ये बहुत जगह पे clearly identified है कि चाहे वो internet connectivity infrastructure हो, चाहे वो teacher training की support हो, चाहे वो टीचर्स को इंसेंटिव्स देने की बात हो, स्कूल फैसिलिटीज़ की बात हो, एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करने की बात हो, ये सब सपोर्ट हमें वी नीड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट. दैट्स एस्टैब्लिश्ड. हाउएवर, व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, कंटिन्यूटी मैंने पहले भी जिक्र किया, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. जब हम बैठते हैं डिसीजन मेकर्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, एंड देन those people come and go at such a regular frequency. So progress naturally hamper hoti hai. लेकिन मेरे लिहाज से the private sector needs to keep doing what it's doing. ठीक है. And eventually, irrespective of support मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले,
हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा. And that's how the private sector's got so far also. इस वक्त वो वाहिद सेक्टर जो कि एक सरप्लस पे ऑपरेट कर रहा है, जिसकी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से ज़्यादा हैं, वो टेक सेक्टर है. So, look towards the government, but do what we can and keep doing what needs to be done to address these issues. That would sum it up. That's wonderfully put. Very aptly put, very well summarized, that I think we need to be better prepared, and instead of depending on one entity or one organization, make best use of the resources, of the time. And I think hopefully Pakistan will do very well in the coming years also. अच्छा, genders को बहुत ज़्यादा जो है वो identify कर दिया जाता है with certain roles. आपने आपकी जो trajectory रही है, you were very candid to share of how you started as an educationist and then as an entrepreneur in the startup space. But the reality is that you do have a leadership role today. So you are in a position to comment on and advise young girls out there of what kind of things they need to keep in mind beyond gender. Because yes, there is a reality of what one particular gender may face, but the strengths that have helped you come this far, let's talk about that. For sure, I think it's quite evident, इस बारे में बात भी बहुत होती है, that women are at a disadvantage at the workplace. And we witness it firsthand also. कुछ केसेस में हमें शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जाता. हो सकता है कि सोसाइटल हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे प्रोफेशनल वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती. I think that's a reality. But for me personally, what has really helped me is to keep focus on my own personal values. चाहे वो excellence at work हो, चाहे वो hard work हो, चाहे वो workplace integrity ho, eventually people see the potential in you. And there are also even male professionals around you are allies in this sense, where they identify and then they assist you and help you. So personal values पे focus रखें, और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये generally सबके लिए rule है कि hard work always pays off. It does. And as long as you're true to yourself, things will come around. Having said that, for females, I do think to be yourself, it's very difficult to be yourself, especially at the workplace. So, ये कुछ अरसे में मुझे ये बात समझ आई कि I do not need to be apologetic of the person I am outside of work. So I am a mother. Right. I like to do other things. I like to sing. I have other hobbies. But if you bring this to the workplace, especially as a female, तो समझा जाता है कि शायद आप उतने अपने work के बारे में serious नहीं हैं. Or you will not be able to give your best in terms of time commitment also. Right. So this is something that I have unlearned. So if typically अगर एक male professional है and they're funny at the workplace, it's considered it's considered a charismatic personality trait. It's a positive. अगर ख़वातीन करती हैं तो यही आउटलुक है कि जी नॉन सीरियस हैं या प्रॉब्ली इनका वर्क एथिक मैच नहीं करेगा. बट I have learned to unapologetically be myself, be the human also that is sometimes my team requires me to be as a team lead, because everybody has personal circumstances, everybody has issues at home, and at the end of the day, the way that you support them emotionally and facilitate them, usi ke through phir they're going to bring their best self to work. And I've actively fought off this generalization ke women leaders are softer, they're more accommodating, they're probably not as harsh as they need to be in management positions. And I think I see this as a plus because the team performs better when they know that there's an empathetic leader who will take care of us so that they can work. Thank you for sharing that. And one thing that resonates with me also, and I'm sure a lot of people, girls and boys out there, is that you have to be confident enough and you have to be allowed to be yourself, because there are so many folds to a person. इतने सारे layers होते हैं कि ठीक है आप हर चीज़ workplace पे लेके नहीं आ सकते, लेकिन workplace का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ को पीछे
छोड़ दें. बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, पाशा gives you the opportunity to speak to meet a lot of tech CEOs. Right. मैं एक अपनी observation बता दूं, and it always holds true, at least so far, is that the person at the center, the founder, the CEO, वो जो personality table पे लेके आते हैं, वो पूरी टीम में रेजोनेट करती है. It's alarming at times, because अगर आपका CEO नार्सिसिस्ट है, सेल्फ सर्विसिंग है, पूरी टीम वैसी होती है. बिल्कुल. और अगर आप खुद प्रोफेशनल, पोलाइट, ह्यूमन हैं, तो फिर पूरी टीम वैसा ही बिहेव करती है. So it's been a huge eye-opening observation for me. तो इसी तरह जब आप लोगों को, when you allow them to be themselves, you create a diverse, inclusive workplace. बिल्कुल. And you allow them also to take one part of their life in tandem with the other segments. Very well said. And these are the sort of workplaces जहाँ पे लोग फिर 15, 18, 20 साल काम करते हैं. So it just promotes good retention, and to know that in a big puzzle of my life, one piece is functioning well and is taken care of, and I don't need to pretend. Yes. And be myself. I can be myself. I think that contributes to a great workplace culture. It indeed does. अच्छा मलिहा, आपने बात की ट्रिकल डाउन इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट इन अ पॉजिटिव सेंस. सीईओ की आपने बात की, जहाँ से शुरुआत होती है ऑफ द काइंड ऑफ कल्चर दैट इज genuinely going to be carried forward by any organization. So you've worked very closely with the MD of Contour Software also, and then you've had the opportunity to work very closely with the rest of the team because of the Techlift Bootcamp. What would you like to say about the people here? So like I said, Bilal's a thorough gentleman, and I think that trickles down through the entire team. पूरी टीम में ये professionalism, polite attitude, facilitative approach जो है ना, ये it is across the board. I've seen it. जहाँ पे Techlift की बात आती है, वहाँ पे हमने इनके टीम के टॉप लोगों के साथ करिकुलम पे काम किया. And the same people are also teaching students in these boot camps. So we've seen students give such positive feedback, not just about Contour, but across the board of these JV members. And I am particularly, I think, I'd like to mention here that companies like Contour, where the top management provides their own voluntary time, because Bilal is part of the skills committee also that composes of 6 other leading industry players. So वो जब बैठ के अपना personal time देते हैं to solve an industry level problem, it really is heartwarming and encouraging for us as well to see that there are people in the private sector who are extending their support, with such valuable time to contribute and address these structural fundamental issues. मलिहा, ये तो बातें हो गई सारी काम से रिलेटेड, और मलिहा से रिलेटेड हमने बस इनिशियली थोड़ी सी एक ब्रीफली टच किया था सरफेस को. सो आई लाइक टू नो अ लिटिल मोर, एंड आई एम श्योर पीपल वुड आल्सो. व्हाट आर मलिहा's pet peeves? Okay, it's a tricky one. So I think अगर प्रोफेशनल सेंस में बात करें तो I do I can't stand laziness, and I think बहुत ज़रूरी है कि आप proactive हो, energy लेके आए workplace पे. कम time काम करें, but उसमें give your best. Right. And professional integrity is also important. ये भी मेरी observation है कि people believe that sharing with the manager if they're facing any problems, if there's something that's bothering them, is a reflection of poor work ethic or competence, जबकि ऐसा नहीं है. एक मैनेजर का काम है आपको facilitate करना, और अगर आप honest नहीं हैं, if you're not telling us what hiccups you're facing या क्या challenges आ रहे हैं, you can't expect someone to solve them also. बिल्कुल. So professional integrity in every sense is important. आपको अनटाइडी कमरा नहीं पसंद है, या you can't do without going to the gym, या you don't understand sloppy behavior, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी. So I think pet peeve के लिए या बहुत ही sensitive aspect है, disrespect at the workplace is something that I just cannot stand. It is a value that respect as a value is very important to me. चाहे junior हो, senior हो, चाहे जिस तरह का भी काम कोई कर रहा है, respect is essential. And that's what I've always tried to inculcate within my team also, because irrespective of hierarchy and level,
रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है. It is the core sort of fundamental upon which जिसकी बेसिस पे लोगों का फिर बेस्ट जो है बेस्ट. बिल्कुल, absolutely. अच्छा, how much would you encourage or advise, or let me rephrase that, लड़कियों को क्या ज़्यादा अपनी फिजियोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है द वर्क प्लेस आके, चूँकि so many of them, whether they are single parents, whether they are married or not, whether they are mothers, I think they tend to kind of not take care of themselves and yet they're giving out a lot. Output बहुत ज़्यादा होता है. How important do you think it is कि physiological और mental health का ख्याल रखा जाए? As a female, हमें जिस तरह रेस किया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि for some reason कि अपना ख्याल रखना या अपने को putting yourself first is selfish. Yeah. And is also coming from a place of non-humility. Right? Which I think ये तो मेरा एक मैंने ये एक एक्टिवली एक नोशन अपने दिमाग में इसको मैंने फाइट किया है कि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को टाइम देना सेल्फिश नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे आप किसी और का ख्याल नहीं रख सकते. एंड दिस इज फिजियोलॉजिकल या मेंटल, दिस इज ऑल encompassing, right? So for example, I am an avid gymmer. I love to gym. Right. And I make the time to do that for myself. I identify that health is the table upon which all of the aspects of my life stand. Absolutely. And I prioritize that. So I take time out जहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूल में है, जहाँ पे मुझे वर्क पे भी कोई तंग नहीं कर रहा, मुझे फैमिली से भी कोई कॉल नहीं करेगा. That's time for myself. Right. उसके अलावा even taking out time to do the things you love. So I enjoy singing. You know, I do music as a side gig. I make time for that. Because it gives me a sense of fulfillment. Okay. So when I'm making time for that, I tell myself that I must not be guilty because I need to be complete as a person in myself. And फिर यही चीज़ें फिर you know मेरी बेटी भी देखती है और वो भी फिर अपने शौक को केटर करती है. सो बिल्कुल अपने आप को टाइम देना, चाहे वो सेल्फ केयर हो, चाहे अपने शौक हो, चाहे अपने पैशंस हो. ये इट इज़ यू मस्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. अदरवाइज आप कुछ भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. एंड इवेंचुअली ख़वातीन के लिए you know you tend to reach burnout then. जी बिल्कुल. Which is such a bad place to be in because उससे रिकवर होने में फिर बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है. बिल्कुल, absolutely. पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक या अंग्रेजी पॉप म्यूजिक? So that's a tricky one. Music जो है ना वो it comes from a creative place जो कि सारी आपकी बचपन की listening से ना inspired बिल्कुल होता है. So abhi tak मैंने जो music बनाया it's been a mix. I mean you'll have English and Urdu in the same music and I tend not to overthink it because it's it's coming from a very personal creative space and वो जो आता है बस फिर हम उसको आने देते हैं. Okay. But do you keep yourself well informed about whatever new Pakistani releases come out? Oh, absolutely. Okay, so question, very tricky question. Pasuri or Kahani Suno? I take Pasuri. You'll take Pasuri? Yes. Okay. It's broken all records and I think it's a song that's really kind of brought Pakistani pop back into this scene. Personally, I think Kahani Suno has, swept the hearts of so many people. So I thought I'd put that out there also. That's true. I understand why it resonates with the masses. Yes. But it's a bit too, I mean, आपने क्योंकि personal preference पूछी, it's a bit too sentimental, emotional for me. ये भी है. ये भी है. Okay, what cuisine do you prefer? So I enjoy eating healthy. Okay. Yeah. Define healthy. So healthy is anything that is, I do try to do my research on health. So anything that consists of less than 3 ingredients is healthy, is organically sourced. मैं ये कह रही हूँ, कहने में बहुत अच्छा है, but I'm also an emotional eater. So जहाँ पे ज़्यादा workload हो जाता है, environment stressful हो जाए, फिर मुझे मीठा चाहिए. Interesting. फिर मुझे बाहर खाना है. But I try to eat healthy. Okay, generally that's good. Are you an avid traveler? I'm less of a traveler as compared to my husband. Recently, I've started traveling a lot with him. Okay. And I'm enjoying it, yes. Okay. But जितना उनको शौक है, उनको रोकना पड़ता है कि ना time है, ना हिम्मत है इतना. So of recent, yes. But it's been a good experience also.
Okay. stepping out of your comfort zone to live out of a bag and to see places and enjoy. So it is. Uska apna hi ek, you're taking risks. You're kind of taking off this fold of yours, and you're just letting loose when you're living out of a bag. 2 items on your bucket list for this year. So for this year, I've already set some goals. I have to release at least 2 music videos. I have the originals ready. So I'm looking forward to that. Yes. And I am going to work on my work-life balance this year. Okay. Yes, for sure. I think mere mein tendency, I tend to get very caught up with ambitions at work. Mm-hmm. So I'm looking to take a step back and spend more time with my daughter. Okay. And bring more balance to life. So you're going to make it life-work balance this year. Life-work balance. Yeah. People are using a new term, which I prefer now, which is work-life harmony. Interesting. So, we shouldn't see them as two opposing forces. Bilkul. Jaise humne pehle bhi baat ki ke work is part of life. So work-life harmony honi chahiye. And I also believe in, flexible working settings, which allow me to take care of things at home. Mm-hmm. And I don't think that so far it's compromised on any of the work that I've done or my work ethic or my ability to deliver. मलिहा, मुझे तो लग रहा है कि कुछ महीने बाद ना आप मिलेंगी नहीं, क्योंकि आप इतनी मशहूर हो जाएंगी. तो ऑटोग्राफ अभी दे दे अगर प्लीज, बिकॉज आपकी 2 वीडियोस आने वाली हैं. बट या, ऑन अ सीरियस नोट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, वट एवर इट इज दैट यू चूज टू डू, एंड आई विल डेफिनेटली बी रूटिंग फॉर यू, as will the team here, as will everybody watching. Thank you so much for your time. No, thank you so much for having me. It's been a lovely conversation, and I hope that all of us can come together to fix the problems that we need to for the country. And bilkul, last message to everyone watching is to be true to yourself and wo karen just jo cheez karne ka shauk hai, and stick to your personal values. Ladies and gentlemen, this will definitely be a conversation that will resonate with so many people. Till next time, this is me, Sulmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.